Namaskar. Welcome to lecture number 3 on relations now. As you can see the name, it's reflexive, symmetric, transitive. Let me share with you always a question on this. And thoda, as per my experience of the classroom, when we do happen to take after the portion is over just before the exam, set of revision lectures. This comes on demand. Sir, वो जरा reflexive, symmetric, transitive थोड़ा आप बता देंगे तो. So let's talk on this. The question is, when are you going to say the relation? It's the nature of a relation, depending on what ordered pairs the relation happens to contain. So you can say it's a characteristic of a relation. When can we say the relation is reflexive, symmetric, transitive? So now once you've seen the heading, this is lecture 3 on relation. Hope it's going well. We are still left with the last part, the functions. But now coming back. Let us say I have defined one R. I have defined a R, a relation from A to A. And let's say my set A was 1, 2, 3. Now if at all my R, the relation contains this ordered pairs 1, 1, 2, 2 and 3, 3, all of them, not a single missing, mark it. Then we say the relation what we see now is reflexive. We say the relation is reflexive. Even if one of the ordered pair is missing, let us say 2, 2 is missing, then we say R is not reflexive. So for R to be reflexive, it should have 1, 1, 2, 2, 3, 3. So that's when we say, let us say it is ABC, the set A is ABC, and your R is defined on A. So R is a relation from A to A. So both X and Y are coming from A. So if the set A contains ABC, then it should be having A, B, B, C, C, all three. Only then we'll call the R as reflexive. Now coming back to the next one. Let us say if the R happens to contain an ordered pair 1, 2 and 2, 1. So it has 1, 2 and 2, 1. Let us say similarly it had 2, 3 also. And it also had 3, 2. Then we say the R is symmetric. We say the R is symmetric. So in general terms we happen to go in this way. If A, B is one of the ordered pairs belonging to R, then B, A must also be present in R to call it symmetric. If it's not present, okay, it was the decision of the R maker. If B, A is not present, then we say R is not symmetric. It's not कि A, B R में है तो B, A होना ही चाहिए. B, A है तो R symmetric है. नहीं है तो R is not symmetric. Check. Now comes the third one, the most challenging one. So can I just copy my set A? 1, 2, 3. And my R is defined on A. That means R is a relation from A to A. What do we understand by that? I think we have a good discussion of all this in our lecture 2. It's going well. I hope you are not keeping any gaps between the lecture. तो फिर आज ये सवाल अनुचित है, unavoidable है, and थोड़ा सा not so tolerable to you yourself also. You have spent almost an hour and a half or 2 hours in your lecture 2 just to understand कि ये क्या है. R is relation from A to A means both your X and Y are coming from A. Now, if R has got, let us say, ordered pair 1, 2, it also had an ordered pair 2, 3. So ऐसा लग रहा है 1 से 2 गया, 2 से 3 गया. So then it should also have an ordered pair 1, 3. 1 से 2 गया, then 2 से 3 गया. तो 1 से 3 भी जाना चाहिए. If this is present, then we say the R is transitive. It doesn't go that simple. Let me share with you. The test of transitivity is always a challenge for a student because I think so. A person discussing transitivity, he doesn't speak in totality. वो पूरी बात नहीं बताता है. Doesn't share because book language support नहीं करता है. So maybe they fear or they don't want to share it. We discuss all this now. So ये तो simple है. आपका मतलब है कि if A, B and then followed by B, C, if they are in our R, then we should have A, C also in R. A, C must also be in R. Yeah, that's the correct language. अगर A B है, B C है, तो फिर A C भी होना चाहिए. A से B गया था, B से C गया था, तो फिर A से C भी होना चाहिए था. If this is satisfied, then we say the R is transitive. But that's not all. Transitivity का test is a challenge. So I give you few tips which may help us to check transitivity in a very clean way, in a quick way. Whenever you want to check transitivity, first of all it should be checked only on pairs which are having hetero components.
अब दिस इज अ न्यू वर्ड, होममेड वर्ड है. हेट्रो कंपोनेंट्स बोलेगा तो उसका एक्स वाई अलग अलग होना चाहिए. 1,1 द ऑर्डर्ड पेयर आर कंटेनिंग एक्स एंड वाई द सेम कंपोनेंट, सो वी कॉल इट इन अवर लैंग्वेज, हमारे आपस के बीच में होमो कंपोनेंट्स. Transitivity should be always checked on ordered pairs having hetero components. So if at all you are checking your transitivity with 1, 1, or you are checking your transitivity on 1, 1, of course you are going to check with a pair starting with 1. A से B गया, so now the next pair should be what? With whom you are going to test the transitivity of your first pair A, B. It has to start with B. अगर आप A, B का transitivity check कर रहे हैं, तो of course you are going to attach a pair which is going to start with B. So now you are going to start with 1. And let us you are checking with 1, 2. You shouldn't have checked. Transitivity is satisfied already. चल सुन, 1 से 1 गया, फिर 1 से 2 गया, तो क्या वो 1 से 2 गया था? वो बोल रहा है मैं खुद पहले जाके आया. आप क्या चेक कर रहे हो मुझको? Let us say you are checking 2, 2. You are checking transitivity on 2, 2. First of all, you shouldn't have, because 2, 2 homo components, they already satisfy transitivity, but you were bit inclined कि I want to check it. So of course you are going to check it with a pair starting with 2. Let us say आप 2, 3 से check कर रहे हो. You are wasting your time. Transitivity is already checked. It's already satisfied. 2 से 2 गया, 2 से 3 गया, तो क्या वो 2 से 3 गया था? वो बोला मैं खुद ही जाके आया हूँ. आप क्या चेक कर रहे हैं? So you should not be checking your transitivity on pairs having homo components. You should be checking transitivity directly on pairs which are having hetero components. So now let us say 1, 2. You are checking transitivity with 1, 2. ध्यान से सुनने का. Now other part. Of course you are going to start with a pair starting with 2. If you are checking transitivity on 1, 2, you'll attach a pair which is starting with 2. A, B के साथ if you are checking transitivity, you have to attach a pair starting with B. So starting with 2 के साथ if you start checking with 2, 2, once again the same flop show. You are wasting your time checking transitivity over here. Its transitivity is already satisfied. क्योंकि ये components homo है. फिर भी आपको शौक था. अभी अच्छा है because हम सीख रहे हैं. 1 से 2 गया, फिर 2 से 2 गया, तो क्या 1 से 2 गया था? वो काका बोलता है मैं खुद ही जाके आया. आप क्या चेक कर रहे हो? Why are you wasting your time checking transitivity with a pair having homo components? Let us say आप 2, 3 के साथ चेक कर रहे हैं. You are checking transitivity on 2, 3. So you will be attaching a pair starting with 3. And what mistake you did? You started testing it with 3, 3. This pair is containing homo components. मैं आपको बोला transitivity already satisfied, लेकिन आपको checking का नशा था. अभी अच्छा है, लेकिन सीखने के लिए अच्छा है. 2 से 3 गया, 3 से 3 गया, तो क्या वो 2 से 3 गया था? वो बोल रहा है मैं खुद ही पहले जाके आया हूँ. Transitivity was already inherently satisfied by them. You just wasted your time checking transitivity in this kind of cases. What kind of cases? Transitivity needs to be checked on pairs having hetero components and on pairs having hetero components. It should not be checked on pairs having homo components. So on and with. It should be checked on pairs having hetero components, and it should be checked with the pairs having hetero components. माने 1, 2, you should be checking not with 2, 2, because that's inherently satisfied transitivity. You should be checking with something like 2, 3, 2, 1, ऐसा कुछ. Then you ask, क्या 1, 3 मेरे relation में है? So in your given R अगर 1, 3 है, so we say transitivity is on, it's satisfied. 1, 2 आप check कर रहे हैं 2, 1, valid checking. You are checking a ordered pair having hetero components with the ordered pair having hetero components. Of course, starting with 2. If your first pair ends with 2, you have to attach a pair starting with 2. तो क्या 1, 1 है? अगर आपके R में 1, 1 था, तो transitivity satisfied है. अगर वो नहीं है, तो transitivity is not satisfied. The last point. Can I repeat this one more time? 2, 3, you need to be checking with what? First of all, you picked up 2, 3, that was a good choice. You are supposed to check transitivity on ordered pairs which are having hetero components. 2, 3 are hetero. They are different. You need to check it with ordered pairs starting with 3, but hetero components. That is a 3, 1. Now you should be checking if your R contains 2, 1. If your R contains 2, 1. If it is there, you say transitivity is satisfied at that moment. आगे जाने का checking. If not, then you say transitivity failed. Stop over there. Relation is no more transitive. क्योंकि इसने तोड़ दिया. A last point. So can I just conclude up till here the check, the test. Now all these things are not mentioned by anybody, and that is why transitivity test
Out of 10 times, student happens to go 9 times wrong. Because all these things were not told to him. They just went by the book language. If R contains A comma B, B comma C, then R must also contain A comma C. A से B गया, B से C गया, तो A से C भी जाना चाहिए था. अगर A comma C R में है तो R transitive है, नहीं है तो R transitive नहीं है. So that's the book language. But all these hidden facts are not spoken of. We are talking on that. अभी तक का डिस्कशन क्या था जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें डिस्कशन अभी इतना ही किया है. नहीं पूरा कर दिया लेकिन इतना हुआ है. The test of transitivity, whether the relation is transitive or not, needs to be checked if you are not interested in wasting your time, which you are not. Should be always checked on ordered pairs which are having hetero components, and it should be checked with ordered pairs which are having hetero components. So 1, 2, don't waste your time checking it with 2, 2. Check it with starting with 2, but 2 के साथ no some other component. 2, 3 है, 2, 1 है. Don't put in a pair having hetero components. Neither first hand पे, neither second hand पे. Neither on पे, neither with पे. I hope on and with is not confusing. This is your testing your transitivity on this ordered pairs with this ordered pairs. And दोनों में एक ही शर्त है. Do not waste your time bringing in ordered pairs which are having homo components. They are inherently transitive. Transitivity is already satisfied. You are checking on it. You are wasting your time. Now the last shot before I get back into my main file, where we just move quickly then because we're too fast. If this is clear. Now let us say you are testing on 1, 2, the test of transitivity, whether your R is transitive or not. You did not find a pair starting with 2. Because you did not find a pair starting with 2, that means आपका transitivity खतरे में नहीं है. Because there is no pair over here who poses a danger of breaking the transitivity. फिर भी स्टूडेंट क्या लिख के आता है, सर कोई पैर ही नहीं था स्टार्टिंग विद 2, तो ट्रांजिटिविटी टूट गया. नो, ट्रांजिटिविटी इज फ्लरिशिंग बिकॉज उसे मारने के लिए दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ. लेट अस से के 2, 3 होता, देन यू नीडेड 1, 3. और अगर ये नहीं होता तो आपका ट्रांजिटिविटी टूट जाता. होता तो ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हो जाता. बट लेट अस से के 2, 3 नहीं है. आई डोंट हैव अ ऑर्डर्ड पेयर व्हेन आई एम चेकिंग विद 1, 2. आई डोंट हैव अ ऑर्डर्ड पेयर स्टार्टिंग विद 2. तो आपका ट्रांजिटिविटी तो खतरे में ही नहीं ना. आपका योद्धा जंग में गया लेकिन दुश्मन था ही नहीं. तो कहते हैं ना, विदाउट फाइटिंग द विनर. ट्रांजिटिविटी मरा नहीं, अमर हो गया. उसे मारने के लिए दुश्मन पैदा ही नहीं हुआ था. बिकॉज अगर 2, 3 पैदा हो जाता और अगर आर में 1, 3 नहीं होता, आर में अगर 1, 3 नहीं होता तो इसने तेरा ट्रांजिटिविटी तोड़ दिया. मगर अगर ये दुश्मन ही पैदा नहीं हुआ है तो आपका ट्रांजिटिविटी मस्त में आराम से जीत रहा है. There is no threat posed to your transitivity. Your transitivity is breathing good. 2, 3 पे चेक कर रहे थे हम लोग transitivity. Then I was just surfing through my R and I could not search a ordered pair starting with 3 and that too hetero. 3, 3 था लेकिन वो transitivity already satisfy करे. That is already discussed. But hetero components का ordered pair starting with 3 नहीं था मेरे पास. Good ना? There is no threat to your transitivity. दुश्मन आया ही नहीं तो तेरा योद्धा तो जीत ही रहा है. वो लेटर से 3, 1 लेके आ जाता तो देन वी नीडेड 2, 1 इन द आर. और अगर ये नहीं होता तो आपका तो फ्लॉप हो जाता, ट्रांजिटिविटी फेल हो जाता, मर जाता. मगर दुश्मन ही नहीं आया, फाइट ही नहीं हुआ, तो ट्रांजिटिविटी हमारा जिंदा है. नाउ विद दिस मच इंफॉर्मेशन आई थिंक वी ऑल आर सेट. बट एक क्विक रिकैप. अगर ए में 1, 2, 3 है और अगर आर इज डिफाइंड ऑन ए, द रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ए, देन आई नीड टू हैव 1, 1, 2, 2, 3, 3 टू क्लेम that my R is reflexive. Second, 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए. 3, 2 है तो 2, 3 भी होना चाहिए. तो सिमेट्रिक. 3, 2 है लेकिन 2, 3 नहीं है. That is the choice of the R maker, one who makes relation. 3, 2 लाया लेकिन 2, 3 नहीं लाया तो ओके फाइन, उसकी मर्जी थी. मैंने लिख दिया R is not symmetric. So AA, BB, CC, it's reflexive. If I have AB, I need to have BA. I have AC, I need to have CA. If I have BC, I need to have CB. तो symmetric. What about the last one? सर वो हम थोड़ा क्विक शॉर्ट पॉइंट तो अलग से याद रखा है. ए बी है, बी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए. ए से बी गया था, बी से सी गया था, फिर ए से सी भी जाना चाहिए था. So if AC is present in your R, then we say R is transitive. If he is not present, which is the choice of the R maker, then we say R is not transitive. Done. A B B C C reflexive. A B है, B A है, सिमेट्रिक है. ए से बी गया, बी से सी गया, ए से सी जाना चाहिए था, ट्रांजिटिव होना चाहिए. ट्रांजिटिव में कुछ हाईलाइट पॉइंट्स.
which can save our time and quite important points. Do not check your transitivity on and with pairs having homo components. Inherently they are transitive. Check your transitivity on and with pairs which are having hetero components. Let's start the game. May R, S, T or E. Okay, I'm really sorry. What does R stand for? Reflexive, S is for symmetric, T is for transitive and E is for equivalence. So अगर R S T हो जाता है, a relation turns out to be reflexive, symmetric and transitive, तो उसको एक नाम दिया जाता है equivalence. So can I just write it by the side? It's called as equivalence. Now, my R is defined on A, B, C. अब देखते हैं यार ये सब में से कौन से satisfy करता है. I can see A, B, B, C, C. Check. I can see A, B, B and C, C. So मैं reflexive को टिक किया. A, B है लेकिन B, A नहीं था. So symmetric टूट गया. Check. कोई एक ने भी तोड़ा तो गया ना. Now transitive. We start with A, B. The first ordered pair having hetero components. You need to attach over here pair starting with B. Nobody tells me B डाल देंगे इसमें. No. We'll be wasting time. It's already transitive. We need to start with pair having B but hetero components. BC है ना? मुझे BC दिख रहा है इधर. But we are checking on right now A, B पे. We are checking transitivity for A, B. So I have attached a pair starting with B, BC. क्या मेरे पास AC है? In the R है. So then we happen to say transitive जिंदा है फिलहाल. योद्धा जंग में गया, एक दुश्मन मारा तो योद्धा जीत नहीं जाता है. लौट के घर आना है, दुश्मन और आ रहे हैं. The next I check on AC. A, C. It's time consuming. A, C के साथ you're going to attach pairs starting with C but hetero. So I've got 2, C, A, C, B. I've got 2, C, A, C, B. Sir, you forgot. आपके पास C, C भी है. Enough explanation. Homo pairs नहीं आएगा transitivity में. न first में न second में. So A, C, C, A. तो क्या A, A है मेरे पास? है ना? First ही खड़ा था. So transitive is going good. मेरा योद्धा अच्छा जीत रहा है. Now AC is checked with your CB. So we needed AB in our R. Do we have AB? Yeah, we have it. So transitivity is still breathing over here. योद्धा हमारा जीत रहा है. Now come to BC. Sir, you skip BB. No more talks. Transitivity will be checked only on pairs, only on and with pairs having hetero components. So the next I move to BC. BC के तहत I need to attach pairs starting with C. So I have got CA, CB. I have got CA, CB. So it will be first checked with CA, then it will be checked with CB. B से C गया, C से A गया. तो क्या B से A गया था? So I needed B, A to make it transitive. But unfortunately B, A मेरे R में नहीं है. मेरे R में नहीं है. So transitivity fails over here. मेरा योद्धा मर गया. ये खत्म, ये भी खत्म. Because all three are satisfied तो E होता है, equivalence. So in this case we only happen to say our relation is only reflexive. You can bring in speed only after doing it 2-3 times, especially the transitivity check. अभी तो पहला सम हुआ है. Now students who just go by the book language, उनका पहले में ही T satisfy हो गया था. They felt, oh gosh, माओ तो T satisfy थे, you tick करके आ गया. They were not taught कि you were supposed to see transitivity till the last pair, but hetero components. योद्धा हमारा घर लौट के आना चाहिए. आगे लड़ते जा रहा है, कहीं तो मरा हो. देखिए, जीतते मर गया. Now coming back. हो, ये तो पूरा ही टूटा हुआ है. So R, S, T and E. Let me redefine. Reflexive, symmetric, transitive, equivalence. इनमें से मेरा relation क्या क्या satisfy करता है? A, A. Can I just copy my A? Because वो तो question ऊपर चले गया. My R is defined on A, which contains A, B, C. My this R right now does not contain A, B, B, C, C. होना है तो तीनों तीन होना है. So भारी मात्रा में R मेरा फटा है इसमें. The reflexive nature is totally thrashed. AB है, BA है, AC है, CA है. Thanks, symmetric तो बना. Transitive के लिए I pick up my first pair. Okay, first pair with a hetero component. So I am testing my transitivity on A, B. But I need to attach a pair starting with B. I have it. B, A. But that says I will need A, A. Sir, how? A से B गया, B से A गया, तो A से A गया. Now when I needed A, A, my R did not have A, A. Unfortunately, transitive मेरा योद्धा पहली लड़ाई में मर गया. So he is gone. I'm sorry. Even transitivity is gone. Equivalence से long back gone हो गया. So long back जब reflexive कट गया था तभी मेरा E कट गया था.
So this time we happen to say the R is only symmetric. Only symmetric. Check. So can you repeat the transitivity ka test? Of course. I started with my first pair A comma B. So I am testing my transitivity on A comma B. It has to be tested with a pair starting with B क्योंकि A and with B हुआ था. So B comma A next ही खड़ा था. Now that demanded कि A comma A होना चाहिए था to make it transitive, which is not there. R does not have my A comma A. So transitivity fails. Transitivity fails over there. Answer R is only symmetric. Now, my R is defined in 1, 2, 3. चल क्या मेरा R1 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस इसमें से क्या क्या सेटिस्फाई करेगा? 1,1 है, 2,2 है, लेकिन 3,3 नहीं था. Which has to be there if the R has to be reflexive. So R is not reflexive. So फिर ये भी कट गया मेरा तो. Now come to 1,2. बाजू में ही 2, 1 था. सिमेट्रिक हो गया. A, B A, B, A होना चाहिए है ना. 1,2 है तो 2,1 भी है. Now transitive का test first will start on what? 1,2. Nice. So we are over here. We are testing transitivity on 1,2. We need to attach a pair starting with 2. Immediately next is 2,1. So now the need arises 1,1. Do the R contain 1,1? Does the R contain 1,1? Yeah, it is there. Transitivity जीत रहा है. मेरा योद्धा जीत रहा है. Now come to next 2,1. It has to be attached with a pair starting with 1 and with 1 starting with 1. 1 से 1,2 था. So 1 से 1,1 भी है. Now this is we have spoken now at length. Transitivity का test will be checked only on ordered pairs and with the ordered pairs having hetero components. 1,1 में time waste चल करते ना. 2,1 to be checked with pair starting with 1 तो you picked up 1,1. अब बात कर 2 से 1 गया 1 से 1 गया तो क्या 2 से 1 गया? काका बोलता है मैं खुद ही जाके आया. क्या चेक कर रहे? So you have to check with 1,2. Now the need arises of 2,2 है ना. 2 से 1 गया फिर 1 से 2 गया तो क्या 2 से 2 गया था. 2,2 is it there present in our R? It is there present in our R1. Transitivity is still no flourishing. वो जीत रहा है, वो सांसें ले रहा है. मेरे ordered pairs खत्म हो गए. Transitivity जीत गया, जिंदा है. So I take mark that. So this time I say my R1 is symmetric and transitive. In fact, I should use the word symmetric and transitive only. In fact, पीछे भी जाके I should be writing वहाँ लिखा है only symmetric. Check. Can I copy my R is a relation on A? So it's defined from A to A. And A is my 1, 2, 3. Chal. Let's check the characteristic of R2. Will it be reflexive, symmetric, transitive, equivalence? 1, 1, 2, 2, 3, 3 है तो reflexive है. 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 3 है, 3, 2 है, symmetric है. I hope you are reading along with me. Now first, transitivity का test will start from 1,2. You have to attach a pair starting with 2. I have got quite many. इधर भी एक है, इधर भी एक है. So I'll be testing 2,1 के साथ, 2,3 के साथ. I needed 1,1. I said okay. Do we have it? Yeah. So transitivity जिंदा है. यहाँ I will need 1,3. I'm testing 1, 2, 2, 3. तो फिर 1, 3 होना चाहिए. अगर 1, 3 है तो transitive है. 1, 3 is not there in R2. Transitivity fails over here. He dies. So उसके साथ E भी मर जाता है. So we say R2 this time is reflexive and symmetric only. Did you check the second one? Sir, अब आगे तो गए नहीं. आगे क्या देखना है? मेरा योद्धा मर गया. 1, 2 when I started checking it with 2, 3, I needed 1, 3 to make it transitive. 1, 3 was not there in R2. So transitivity fails. Game over. December 22. सब recent में दिख रहा है. December, June. Okay. Full question सामने दिख रहा है. R is defined on A. The set A contains 1, 2, 3. Now come to R. मैं यहाँ लिख दूँ reflexive, symmetric because we have just formed a habit of writing this. 1, 1, 2, 2, 3, 3 है तो reflexive है. 1, 2 है लेकिन 2, 1 नहीं है. A भी है लेकिन B A नहीं है. तो symmetric मरा साथ में E भी मर गया. Now let's come to the test of transitivity. Starting with first ordered pair having hetero components. 1, 2 के साथ. We are checking on 1, 2. We need to attach a pair starting with 2. I got 2, 3. I need 1, 3 to make it transitive. क्या 1, 3 है मेरे पास. So transitivity जिंदा है. Now next move to 2, 3. We need to attach a pair starting with 3. But starting with 3 वाला 3, 3 then already inherently वो transitive है. So we are not going to waste time putting 3, 3 over here. Transitivity already satisfied.
बट एज सच आई वुड हैव नॉट इवन वेस्टेड दैट मच टाइम. 2,3 के साथ अटैच करने वाला पैर 3 स्टार्टिंग वाला होना चाहिए. वैसा एक भी पैर नहीं है जो हेट्रो कंपोनेंट है स्टार्टिंग में 3. सो मेरे ट्रांजिटिविटी को कोई खतरा नहीं है. मेरा योद्धा बिना लड़े जीत रहा है. उसकी गलती थोड़ी है जंग में दुश्मन नहीं उतरा तो. नाउ कम टू 1,3. सेम केस. I needed a pair starting with 3, but I don't have it. So then your transitivity is still no, बिना लड़े जीत रहा है. कोई दुश्मन ही नहीं है उसे मारने के लिए. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि वो 3,1 आ जाता, no 3, लेट अस से कि 3,2 आ जाता. तो देन आई नीडेड 1,2. क्या 1,2 है? देन आई कैन से ट्रांजिटिविटी जिंदा है, मगर इस बार योद्धा से लड़के वो जीता है. बट अगर 1,3 के साथ when I am trying to bring in a pair starting with 3 and I don't have a pair starting with 3, तो मेरे ट्रांजिटिविटी को कोई खतरा ही नहीं है. सो वो आराम से जीत रहा था, बिना लड़े जीत रहा था. Of course that was only the example given to you. Can I come back on the last two? What happened to 2,3, 1,3? When I was checking transitivity on 2,3, I had to attach a pair starting with 3. If we ignore 3,3, which you are supposed to because it already satisfies transitivity without me checking that. I wanted a pair starting with 3 but hetero components. I did not have it. So what I am going to say is what? Transitivity को खतरा नहीं है. Same happened with 1,3 also. When I was checking my transitivity का test on 1,3, I needed to attach a pair starting with 3. नहीं था, तो अच्छा है ना. तेरा योद्धा बिना लड़े जीत रहा है. Transitivity is fully on. उसे मारने के लिए पैदा ही नहीं हुआ कोई. So this time your answer, now we go by options. Symmetric and transitive, that was flop. Symmetric तो cross है. Reflexive but not transitive. Oops, transitive तो था वो. So not transitive, वो तो नहीं चलेगी. Reflexive but not symmetric. This goes. See, it's reflexive but it is not symmetric. So right now I am marking C, but let me read now D also. Neither symmetric nor transitive. That was galat. ये part galat है. The relation is transitive. It's saying neither symmetric nor transitive. So he is gone. Finally we come down to option number C, which says reflexive but not so symmetric. So this time conclusions were not on your hands, in your hands. Basically अगर मेरे हाथ में होता तो मैं ऐसा लिखा होता. It's reflexive and transitive only. But you'll have to now read the options to see which exactly goes by that no answer. June 22. Your R is defined on A, 3, 6, 9, 12. So क्या 3, 3, 6, 6? Can I just finish off first of all? R, reflexive, symmetric, transitive, equivalence. Okay. Let's check our R on all this. 3, 3, 6, 6, 9, 9, 12, 12 सब थे. So reflexive है. A, A, B, B, C, C सब था. Now 6, 12. So then I need 12, 6 to make it symmetric. 12, 6 नहीं है. For that matter, I was supposed to stop over here. Symmetric cross कर देता हूँ मैं. But even if you see 3, 9, to make it symmetric 9, 3 होना चाहिए. But then there should be no argument over here. हम ये बाकी का चेक बेकार में कर रहे हैं. 12, 3, 12 है तो 12, 3 भी होना चाहिए था, नहीं है. But 6, 12 already बोल चुका है. The R what we are dealing with is already not symmetric, तो आगे चेक करने का जरूरत नहीं है. Now come to transitive. We first start with 6, 12. So I started 6, 12. I need to attach a pair starting with 12. Do we have it? I don't have a pair starting with 12. Sir, है ना 12, 12. वो आप चेक करो. We have enough discussion on this. 12, 12 लाया तो टाइम वेस्ट हो रहा है क्योंकि ट्रांजिटिविटी तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड था उसमें इन आवर डिस्कशन. सो वी वांटेड अ पेयर स्टार्टिंग विद 12 बट हेट्रो कंपोनेंट. वैसा कुछ नहीं है तो मेरा ट्रांजिटिविटी को कोई खतरा नहीं है, दुश्मन था ही नहीं. कम टू 3, 9. I needed a pair starting with, I am checking my transitivity on 3, 9. I need to attach a pair starting with 9. But hetero. अब 9 start से hetero वाला कोई भी pair नहीं. 9, 9 है. If you want you can check it. Okay, check. क्या 3 से 9 गया? वो बोल रहा है you just wasted your time. मैं खुद ही जाके आया था. You just wasted your time. Come to 3, 12. Oh, same issue once again. 3, 12 में लाया. So I am checking my transitivity now on 3, 12. Now यहाँ पे student क्या होता है मालूम है? If I can know, just put a bit of it. एक का transitivity satisfy हो गया and that too with this clarity. Because 6, 12 के साथ 12 स्टार्टिंग का कोई पैर ही नहीं था, माने मेरा ट्रांजिटिविटी का चेक ही नहीं हुआ तो वो फ्लॉप हो गया, मर गया. अरे काका तेरा योद्धा को दुश्मन नहीं मिला तो ईश तो नो आराम से जीत रहा है ना, बिना खेले जीत रहा है. 3, 12 के साथ भी वही हो रहा है. I wanted to bring in a pair starting with 12 but hetero component. 12, ऐसा कोई था ही नहीं. 12, 12 था but already satisfied है. So I say my transitivity is still on. माने मेरा योद्धा बिना लड़े अभी तो जीत रहा है. कब से जीत रहा है? Now come to 3, 6. The last.
उसके पहले तो हमारे स्टूडेंट लोग ने OT सेटिस्फाई हो रहा है मार्क करके निकल गए. 3,6 के साथ I need to attach a pair starting with 6. Do we have it? We have it. We have it. नहीं ना नहीं बोलने का. We have 6,12. Check. देख के बोलने का. बाकी सब में पैर नहीं था तो इसमें भी पैर नहीं है, चलो ट्रांजिटिव जिंदा है. No, don't go by that. Now I need 3,12 to make it transitive. Do we have 3,12 in our R? We have it. So I am enjoying. My transitivity is on till the last ordered pair. Now I say it's transitive. Of course, he's तो gone long back. So long back symmetric cancel हुआ तो E भी cancel हो गया. E for equivalence. So we can see it's reflexive and transitive only. I can see option number B. Reflexive and transitive only. Hope the clarity of test on transitivity is quite clear. एक ही बड़ा point. The test of transitivity has to be conducted on ordered pairs which are having hetero components, and they need to be checked with ordered pairs having hetero components. Do not check it with ordered pairs having homo components. You are already wasting your time because transitivity is inherently satisfied. Hush. सांस अटक गई. चलो. Unique sum. But you need to bring in all your knowledge. And knowledge इतना ही तो है. ऐसा थोड़ी कि पूरा मटका भर के लाना है. पोटली भर का तो knowledge है इसमें. A B B C C है तो reflexive है. A B है तो सिमेट्रिक है. ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. सी डी है लेकिन डी सी नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है. ए से बी गया, बी से सी गया तो ए से सी गया है तो ट्रांजिटिव है, नहीं है तो नहीं है. वो टेक्स्ट बुक वाला बोलता है. हम थोड़ा और आगे गया. नाउ कमिंग बैक ऑन जून 23 मैं बोला आसू છે खाली 2 ऑर्डर्ड पेयर में दे वांट मी टू चेक व्हाट रिफ्लेक्सिव. ओ माय गॉड, सी द क्वेश्चन, मेक इट इक्विवेलेंस. माने उन्होंने आर स्टार्ट कर दिया है. They have started R by putting 1, 2 and 2, 3. They are asking you put in the other ordered pairs. Which more ordered pairs now need to be added to R to make it equivalence? माने आपका R reflexive, symmetric and transitive सब होना चाहिए. Then it is going to attain the characteristic of being called as equivalence relation. कितने ऐसे ordered pair जोड़ने पड़ेंगे? तो R was defined or नहीं? My A was 1, 2, 3. तो इतना तो मैं फटाफट बोल दिया. I'm so sorry. 1, 2, 3 था. R was defined on नहीं. So मैं बोला 1, 1 तो होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए. तो वो reflexive हो जाएगा. Now come to symmetric. They already are giving you 2 pairs in this. 1, 2 तो फिर 2, 1 होना चाहिए. Sir नहीं है. You're not getting the theme of the question. हमें वो ordered pairs डालने हैं to make it equivalence. तो उन्होंने 1, 2 दिया ना. So now we need to put in 2, 1. 2, 3 दिया तो we need to put in 3, 2. तो if I do that, यहाँ तक reflexive symmetric हो गया. Check ना. 1, 1, 2, 2, 3, 3 है. 1, 2 उनका है, 2, 1 मैंने डाला. 2, 3 उनका है, 3, 2 मैंने डाला. Symmetric also satisfied. Now come to transitive. So symmetric also मैंने satisfy कर लिया. अब 1 से 2 था, 2 से 3 था, तो फिर 1 से 3 भी होना चाहिए to make it transitive. Check. Can I come in once again? 1 से 2 गया, 2 से 3 गया. So the next ordered pair should have been 1, 3 to make it transitive. सर नहीं है, तो वही तो बोला आप डाल लो to make it transitive. लेकिन ट्रांजिटिव के लिए जब मैं ये ऑर्डर पैर डाला, पीछे जाके कतरा खड़ा हो गया. बिकॉज आई केम टू ट्रांजिटिव आफ्टर सेटिस्फाइंग सिमेट्रिसिटी ऑफ अ रिलेशन, बट हैविंग एडेड अ न्यू पैर, न्यू ऑर्डर पैर 1, 3 डाला बाद में, तो आई शुड हैव गॉन बैक टू सी ना कि कोई टूटा तो नहीं पीछे. देख 1, 3 डालेगा तो फिर 3, 1 भी होना चाहिए, और अगर वो मिसिंग है तो आपका सिमेट्रिसिटी टूट जाएगा. सो गो बैक एंड ऐड ओवर हियर 3, 1. दिस वाज कॉमन सेंस, बट मेनी स्टूडेंट्स वुड हैव मिस्ड आउट दिस. 1, 3 डाला, ट्रांजिटिव हो गया, so he must have counted 6 ordered pairs डालना था. He would have counted this many. क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं होगा ना, मैं 1, 3 after satisfying symmetricity डाला है. So 1, 3 may, the new ordered pair which I have now added after satisfying symmetricity, may have posed a threat to symmetricity. 1, 3 डालना, पीछे जाके देख 3, 1 तो नहीं है, आपका symmetricity टूट गया, आपका बनाया हुआ symmetricity टूट गया. मत टूटने दे, डाल पीछे जाके 3, 1. So now in all you have to add 7 ordered pairs. The answer is 7 ordered pairs. जब ये 2 और ये 7 मिल जाएंगे तब आपका R will attain what? Equivalence. क्योंकि 1, 2, 2, 3, 3 आ गया तो रिफ्लेक्सिव हो गया. 1, 2 है, 2, 1 है, 2, 3 है तो 3, 2 है. And then I'm putting 1, 3 to make it transitive. 1 से 2, 2 से 3 तो मैं 1, 3 डाला ट्रांजिटिव करने के लिए, तो वापस जाके 3, 1 भी डाल दिया. All 3 now get satisfied and therefore your R now attains equivalence. So we have to add 7 ordered pairs. The answer was your option number B. Hope you all must have enjoyed this. अब जून 23 में देखो R ही गायब कर दिया. They want you to design the R. They have given you all the सामग्री to design the R.
x is in relation to y. मैं बोला वो क्या नया बात है क्या, रिलेशन में x, y, ओनली दोस टू आर रिलेटेड टू ईच अदर. हमने देखा ना लेक्चर 2 में x डाल y दूं, तो रिश्ता किसके बीच में, x y के बीच में. मैं बोला अब रिश्ता बताओ और किस पे डिफाइंड है वो बोलो. तो रिश्ता बताया उन्होंने, x minus y has to be divisible by y by 5. So only those x comma y can be in my R wherein x minus y is divisible by 5. मैं बोला चल वो मैं समझा. नाउ आपका R डिफाइंड किसके ऊपर है, सेट तो दे दो जिस पे डिफाइंड है. तो बोलता है नेचुरल नंबर. वहां में फट गया. नहीं मेरा फट गया ऐसा नहीं बोल सकता है, इट्स अ वीडियो सो आई कांट से मेरा फट गया. मैं फट गई. इनफाइनाइट सेट. मैं बोला चल ना हम सीमित कर लेते हैं. लेट अस टेक R is defined on a natural number where natural number I can take only 1/611. सर जी कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, खाली 1/611. फर्स्ट ऑफ ऑल खाली 1/611 लिया वो नहीं सोचना चाहिए था. सोचना ये चाहिए था कि 1/611 क्यों लिया है. 1/611 ही लिया क्योंकि आई वांटेड टू टेक अ फाइनाइट सेट, क्योंकि मेरे को ये R लिखना है. More important was this to be thought about. Why did he take 1/611? I think आप फर्स्ट लाइन मिस किया. The x minus y has to be divisible by 5. तो मैंने वो एलिमेंट से ऐसे लिए कि गैप ऑफ 5 है उनमें. चल अभी चलते हैं. Let's design the R ना. अभी पूछ. Your R is defined on n. Your n you are taken as a finite natural number set with elements, nicely designed elements 1/611. Pre-planning. तेरे R में अब क्या क्या हो सकता है. क्या R में 1, 1, 6, 6, 11, 11. थिंक इन द वे कि आपको से रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक बनाना है. नहीं तो तू बोलेगा सर अब इसमें R में लूप क्या. इफ यू थिंक इन दिस वे कि मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना था तो यू वुड हैव थॉट ऑफ कि क्या 1, 1, 6, 6, 11, 11 है. सर हाउ कैन 1, 1 बी इन आवर R. आप ये कंडीशन में डाल के देखो. 1 minus 1 is 0. Is 0 divisible by 5? If somebody says no, you need to laugh on him. या कुछ सुना दे. जा वापस पैदा हो, reboot हो. 0 is divisible by any number. No number can be divided by 0. But 0 can be divided by any number. So 1, 1 मेरे R में हो सकता है. All those x, y can be ordered by in R wherein the x minus y is divisible by 5. Can I repeat this perfect line? Perfect mincing of words. Confusing नहीं. All those x, y can be in my R who satisfies x minus y is divisible by 5. तो क्या सवाल खड़ा था. 1, 1, 6, 6, 11, 11. Will it be a part of my R? Yes. 1 minus 1, 0 divisible by 5. 6, 6. Yep. 6 minus 6. For 6, 6 to be in R, it has to satisfy this condition. तो डाल के देखना. 6 minus 6, 0. Is it divisible by 5? Yes. 11 minus 11, 0. Yes, divisible by 5. So 1, 1, 6, 6, 11, 11 is there in our R. So we say reflexive तो है. Now come to symmetricity. तो ऐसा सोचने का ना. With that in the viewpoint. 1, 6 ले. पहले तो सवाल पूछ 1, 6 हो सकता है क्या. हाँ, क्योंकि 1 minus 6 minus 5 is very well divisible by 5. Minus 1 is the answer. अगर 1, 6 अंदर है तो फिर 6, 1 भी होना ही चाहिए. And I'm not even going to test the condition. Because अगर a minus b was divisible by 5, then b minus a also has to be divisible by 5. I see in this way. अगर a minus b divisible by 5 था, that means the gap was a multiple of 5. So फिर b minus a also gap will be a multiple of 5. पर ऐसे भी मैं ना ज्यादा बात करूँ तो 6, 1 also satisfies that condition. चल 6, 11 ले. Will he be a part of our R? Yeah. 6, 11 to be in the R has to satisfy that condition. तो डाल ना, तू मेरे को क्यों देखता है. 6 minus 11 minus 5. यप, मैंने इसलिए तो गैप्स 5 का लिया हुआ है. मैं बिना सोचे 6, 11 लिखता है. लेकिन यहाँ हमारे टुडे व्यूअर्स ऐसा है 6, 11 कैसे ले लिया वो. मैंने बनाया है वैसे था 1, 6, 11. So क्या 11, 6 होगा. बिना वहां लिखे बोल देने का होना ही चाहिए. Because 6 minus 11 अगर divisible by 5 है, then 11 minus 6 also will be divisible by 5. Without doing the subtraction, you should be able to see that. किसी ने बोला a minus c was divisible by 5. इतना algebra सीखा होना चाहिए. अगर a minus c divisible by 5, that means the gap between a and c is a multiple of 5. So फिर c, a, c minus a also has to be divisible because उसमें भी gap c minus a ही हुआ ना. So 11, 6 will be there. और ऐसे भी अगर मैं ना भी सोचूं इतना, तो 11, 6 वहां सेटिस्फाई हो रहा है. अभी 1, 11 नहीं बोलना because it's there.
111 is he there in R? Yeah, because the gap is 10 and 10 is divisible by 5. तो क्या 11,1 सर हो गया, समझ गया. Symmetricity is heavily satisfied by all of them. अगर A, B R में है तो it indicates कि A minus B was divisible by 5, which also indicates कि B minus A also will then be divisible by 5. So even B, A had to be in R. So now my R is showing AB, BA. It shows symmetricity. Now come to last, transitivity. बातें होनी जरूरी है ताकि ये सोच तू बहुत सारे और सम्स में लेके जा सके. Why do every time students happen to ask me this particular, whether it is any group, any branch, और रिविजन में ये वापस पूछते ही है, बिकॉज इतनी बातें उन लोग रिकलेक्ट नहीं कर सकते. एट दिस मोमेंट यू आर गोइंग अलॉन्ग विथ मी, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे यू मे फॉरगेट ऑलमोस्ट द फुल लेक्चर किसने क्या बोला था. Even the very fine point which I told you, which I pressed so hard, the test of transitivity has to be conducted on what? On ordered pairs and with ordered pairs having hetero components. Unless somebody is writing that, which is such a wonderful habit. आ जारे आ बोलतो छे कि बुक में नहीं लिखा छे, तो फिर हमको लिख लेना चाहिए ना ये पॉइंट. बट ठीक है, नाउ यू डोंट गो बैक एंड राइट इट. पहले सम में आगे जा. अभी सवाल पूछ. Create a situation of transitivity. 1,6, yes, he is there. 6,11, he is there. In R. Because this both the ordered pairs are satisfying my condition of x minus y divisible by 5. तो क्या 1,11 होना चाहिए? फिलहाल तो मैं अगर इसमें डालू तो ये मुझे दिख रहा है. But I should not have taken this यहाँ तक. उसको यहाँ तक लेके क्यों गया? मेरा 10 साल का अलजेब्रा बेकार गया. 1,6 divisible by 5 है, तो gap is multiple of 5, which is 5. 6,11, the gap is divisible by 5. अभी तो वो इसमें है. Then the total gap will be what? A multiple of 5. 1 से 6 का गैप 5 का था, 6 के 11 का गैप 5 का, तो 1 से 11 10 का गैप. Even that's a multiple of 5. But if A, B is in R, how is it possible? Only when the gap between A and B is a multiple of 5. Now come to B, C. If BC is in R, how is it possible कि वो R में बैठ गया? Only when B minus C, the gap between B and C was divisible by 5 or a multiple of 5. Then the total gap from A to C, even that will be multiple of 5, which is now you can see in this example also. 1,6, 6,11, they are happily in R because they are satisfying x minus y divisible by 5. 1,11 has to be there because gap of 5, now total gap of 10 is a big multiple of 5 now. Transitivity is satisfied. I hope you understood this. Few still always feel कि यार वो n इतना बड़ा set and he just took a finite set. तो पहले I was talking with you in the other language also, common language. क्या A, A ये R में हो सकता है? हाँ, because A minus A is 0, which is divisible by 5. He satisfies the relation, so he has to be in R. अगर A B R में है, तो क्या B R में होना चाहिए? तो ask yourself, अगर A B R में है, तो A B must have satisfied what? This condition. The A minus B must be divisible by 5. So then it also says B minus A also will be then divisible by 5. Check. So symmetricity. Now I am not using numbers. So let's say I am going with my infinite set of n. अगर A से B और B से C, माने A B and B C both were there in R, कब होगा ये R में? इस R में. When will A B B C will be there in this R? Only when the gaps between A B and B C are multiples of 5. Then the total gap A to C will be a bigger multiple of 5. A से B 10 था, B से C आपका 5 था. Now the gap is what? 15. Is a bigger multiple of 5. Transitivity had to be satisfied. So my answer turns out equivalence. All three got satisfied. Wow. Respect June 23. Who gave you a chance? You are not in June 23. He gave you a chance. Check into all this. Bring in your knowledge. Okay. ये मुझे वापस से वो सेकेंड लेक्चर में ले गया, वो आर इनवर्स वाला. इट्स अ डिवाइजर ऑफ, तो मैंने वो एक्स और वाई. सो वी नीड टू कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय राइटिंग एक्स वाई ओवर हियर. नाउ इट मेक्स सेंस. रिलेशन इज फॉर्म्ड ओवर हियर. माय एक्स नीड्स टू बी स्मॉलर देन वाई, बट डिफाइंड ऑन व्हाट? एक सेट तो दे दो. यहाँ सेट अंडों का दे दिया. द रिलेशन इज डिफाइंड ओवर अ सेट ऑफ एग्स. सो लेट मी ड्रॉ अ सेट ऑफ एग्स. एक छोटू एग, एक थोड़ा उससे बड़ू, एक थोड़ा उससे बड़ा. हमारे क्लास में बोलते हाथी का अंडा. बोला क्या बोल रहे. बट एनीवे, नाउ लेट्स डिजाइन अवर आर. क्योंकि मैंने सेट तो डिफाइन कर लिया. मैं आर इज डिफाइंड ऑन दिस सेट.
क्या 1,2 आ सकता है? यप. It has to satisfy this condition. X needs to be smaller than y. क्या 2,3 आ सकता है? Yes. Because 2 is less than 3. Not the number, the अंडा का size. तभी वो 2 और 3 लिखा. 2 is not the numeric number. 2 is the अंडा number 2. Egg number 2. तो क्या 1, 3 आ सकता है? Yes. Because 1 is very छोटू अंडा in front of 3. He satisfies my first condition. My condition of R. The first component का अंडा has to be has to be smaller in size than the second component अंडा. Oh my God. सर क्या हो गया? ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई हो गई. देखना 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 1,3 भी है अंदर. सो मैं इतना तो लिख दो, ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाइड. अभी बाकी अभी देखना पड़ेगा. सर आपने डिलिबरेटली 1,1, 2,2, 3,3 नहीं डाला. मैं पागल थोड़ी है. हाउ कैन आई पुट 1,1? हाउ कैन आई egg be smaller than himself? Because condition है the first egg has to be smaller than the next egg. The x has to be lesser than the y. तो 1,1 कैसे डाल सकते हैं? egg खुद से कैसे छोटा हो सकता है? चलो सर माना, आपकी बात मान ली हमने, ये काट दिया, ये भी काट दिया. सिमेट्रिसिटी आप जानबूझ से नहीं ला रहे हो. 1,2 लिखा, 2,1 क्यों नहीं लिख रहे? 2,1 कैसे लिखूं मैं इसके अंदर बता. When the condition clearly says that the first egg has to be lesser than the smaller in size than the second egg. आप तो उल्टा ही लिख दिया. तो ये भी नहीं हो सकता है. Symmetricity is also gone. It's only transitive. It's only transitive. Fortunately. कुछ तो आया. Check. Wonderful, ना? It gives you more exposure. Let me share with you. बहुत लोगों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता. Forget about the which topic it belongs to. हाँ सुन लाई कुछ रे, ये क्या था रे, कुछ टाइपो एरर हो गया लगता है. क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं है यार. और वो अजीब अजीब ऑप्शंस दिए हुए हैं. Now, coming to the next question. सबसे पहले तो I think you should be putting your x and y. You should be putting your x and y over here. Okay. So now at least I can read the relation. X is perpendicular to y. So मेरे ordered pairs में वो x y आएंगे wherein the x is perpendicular to y. But I need to have a set जहाँ से x y आएगा ना. My R has to be defined on a particular set. तो दिया it is defined on a set of straight lines. Let's take one set ना. जैसे 1, 6, 11 लिया था. तो यहाँ पे हम L1, L2, L3 लेते हैं. बट C2 के ऑर्डर पेयर्स बनने चाहिए. और ऑर्डर पेयर बनने के लिए आपका रिलेशन क्या है? Your first line has to be perpendicular to the second line. So let's draw in this way. The L1 was perpendicular to L2 and L2 turned out to be perpendicular to L3. I hope you can all see that, no? L1 perpendicular to L2 है and L2 is perpendicular to L3. Now let's design our R so that then we can decide कि R इनमें से कौन कौन है और R satisfies which of this no characteristics. Can we have 1, 2? Yes. L1 is perpendicular to L2. So 1, 2 आ सकता है. 2, 1 आ सकता है क्या? अगर L1 is perpendicular to L2, then L2 is also perpendicular to L1. We can see the diagram. So if 2, 1 also satisfies this condition, the first line has to be perpendicular to second line. Is 2 perpendicular to 1? Yes. Symmetry जीता. सर और एक बताऊं. हाँ 2, 3. पहले 2, 3 आ सकता है क्या वो देखने का. Yeah, 2 is perpendicular. 2 is perpendicular to 3. So 2, 3 very well can be there. Can be नहीं, it is there in our R. तो क्या 3, 2 भी आ सकता है? Stupid यार, not you. Stupid बात. अगर 2 perpendicular to 3 था, तो even 3 is perpendicular to 2. So even 3, 2 has to be there over here in R. All those ordered pairs where the first line is perpendicular to the second line has to be there in this R. So 2, 3 है तो 3, 2 भी होना ही चाहिए. Now, गेम खुला है. सर 1, 1 लिखो ना आप. नो, लाइन खुद से परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? सर बैंड होके वापस अपने में आएगा नहीं ना. तो 1, 1, 2, 2, 3, 3 लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ. तो रिफ्लेक्सिव तो गया. So there is no room for 1, 1 over here because it does not satisfy that thing. ट्रांजिटिव का तो कंडीशन इधर ही खड़ा है. देख 1 से 2, 2 से 1. तो क्या 1 से 1 है? हमारे आर में 1, 1 है ही नहीं. So transitivity also failed over here because if we just talk about that pairs, 1, 2 है, 2, 1 है, which is already there in our R. I needed 1, 1 to complete the transitivity of my R, which is not there and never possible. So transitivity भी गया, ये भी गया. Only thing satisfied is symmetricity. R is only symmetric.
I enjoyed like anything. I hope you all enjoyed this. This puts an end to our lecture 3 on relation, wherein we just तो नहीं बोलूंगा, wherein we have discussed this part of relation, symmetric, reflexive and transitive nature of our relation. I would not repeat any of the points because then it will be too much repetitive. मैंने करने के time बहुत in fact the only pressure I felt was while I was testing transitivity. भावुकों के अर्ली कुछ ऑर्डर पेज मेरे ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई कर गए और मैं टिक कर गया, और बाद में घर आके पता चला योद्धा घर पहुंचा ही नहीं था, क्योंकि वो तीसरा दुश्मन उसे मार दिया जो तू चेक नहीं किया था. You were supposed to check that. You have to go till the last ordered pair to check your transitivity जिंदा है कि नहीं है. With that we put an end to our part 2 relation.